A very good evening to all of you. I am Dr. Lakshmi, President WOW India, Well-Being of Women. I wish all of you a very happy Independence Day and my greetings on the 74th Independence Day celebrations, which was yesterday. We have crossed 74 years of independence, and therefore each one of us as citizens of the country have to take up responsibilities on our shoulders. All of us have to see that we become responsible citizens in the way that we help in the nation's development. Not only the nation, collectively all of us become a global citizen. And therefore we have responsibility towards not only our nation, but the world at large. With these words, I once again give you greetings for the 74th Independence Day. Since we have all to take the responsibilities, I thought I will keep the topic of my talk today as Enlightened Citizenship. I'll start with my presentation. Enlightened Citizenship. Question arises, what do we mean by citizenship? A citizen means a free individual who has unlimited potential. देखिए यहाँ जब मैं कह रही हूँ unlimited potential means वो कुछ भी कर सकता है. हम अपने आप को सोचते हैं limited individuals, but we have unlimited potential, freedom and responsibility towards the nation, and thus collectively for the world at large. Because of the fact that we are all global citizens. Now, what is meant by the word enlightened? Enlightened person is loving, kind and compassionate. He or she genuinely cares about other people, is peaceful and serene, free of fear and other unwholesome emotions, sees human conditions, reaches beyond this physical existence. We think we are this flesh and mind and body, but we are beyond this. We are only the Atman, the soul. He has no worry. He understands freedom from suffering comes from within, अंदर से आती है. यदि हम आत्मा को समझ लें, तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है. And ये कभी भी material possession से नहीं आएगी. What are the qualities of an enlightened person? He is happy. He or she has lot of inner strength, क्योंकि आत्मा बल है. Not self-centered. Patient and understanding. Humility. कहीं भी किसी भी level पे पहुंच जाएं, तब भी humble होंगे. Is a leader, has leadership quality. Mindful of his health, because unless and until he is okay, he or she is okay, they can't serve others. Committed to his or her spiritual practice. Insightfulness and open-minded. Loving, kind and compassionate. Emotionally stable. Unless and until the person is emotionally stable, you can't serve others. Peaceful and serene. India got the freedom on the midnight of 15th August 1947. On 26 January 1950, we became citizens of the Indian Democratic Republican state by adopting the Constitution of India, which treats the entire people as sovereign and free and none treated as slaves. What a beautiful concept. But we did not understand its implication and failed to take sustained energetic steps. All of us know with freedom comes responsibility.
We did not even give serious thought to it as to what changes should this status produce in myself, in my attitude, my behavior, etc., for the progress of our nation. That was a big misfortune, which led to lots of social evils in the society, such as gender inequality. Women were not considered as equal as men, and it started with female feticide. बच्ची को भ्रूण हत्या कर दो यदि पेट में आई है. If she is not killed in the womb, as soon as she is born, she should be killed. She is born to die. And you can see क्या हो गया हमारे रेशियो को. In Delhi itself, it is 800 to 1,000. 800 females to 1,000 males. Now, it's in posh areas outside Delhi. Child labor. The children have to do such hard work, not go to school. Another social evil is the child marriage. All this has led to dowry. Everybody wants some material possession in the marriage from the girl's party. We have become very corrupt, a corrupt society. Corruption everywhere. If you want to get any work done, you have to pay for it. So we have to say no to corruption. What can the Prime Minister alone do it? He's trying corruption, free India, clean India. But can he do alone? Swachh Bharat क्या अपने आप कर सकते हैं? Rapes, every day you open the newspapers, you only see rape of young children also. What a pity. Pornography. Now that this social media has come, all are misusing the social media. We all know Buddha said we have to preserve our environment. Did we bother about the environment? What has happened to Delhi? Pollution. Fortunately, due to the virus, since the vehicles are not on the road, we find that the pollution has reduced. Delhi has been called as the world's most polluted capital. Gas chamber, because we have so many landfills. You can see here, what is the scenario of garbage in Delhi? How are we going to clean it unless we reuse and convert this garbage into wealth? You can see Gazipur garbage was dumped and then it collapsed. And look at what has happened. The car is falling into a drain. Social media has disconnected the family. Look at the child. Mother, father, both on WhatsApp. We have to take care of our trees. They remove carbon dioxide, reduce erosion, add oxygen. They prevent flooding, cool our houses, provide food, provide medicine. We have to all plant a tree, save our earth. But we are cutting trees. What has happened? With social media, cyber crimes have increased. Look at her saying here. This boy is saying, I have only shared her post. Now the policeman is saying, okay, you can share the cell, also go to the prison. Now, if we have to remove the social evil, Swami Ranganathananda, the president of the Ramakrishna Mission, he wrote a book, Enlightened Citizen and Democracy in 1989, and organized a lot of conferences on it. He was chosen by the Indian government for the Padma Vibhushan Award in 2000. He declined the Padma Vibhushan as it was conferred on him as an individual, in his individual capacity, not for the mission. He accepted the Indira Gandhi Award for National Integration in 1987 and Gandhi Peace Prize in 1999, as both were conferred on Ramakrishna Mission. Now, after independence, what happened? The education system was designed by Macaulay, and he knew how to enslave the Indian mind than to liberate it. Thus, he alienated us from the Vedic culture and the Sanskrit language, because all our mythological texts, etc., are in Sanskrit.
Once you don't know the language, we lost our spiritual traditions. Our old system of education was wonderful. Hearing was a part of it. Chanting. Chanting mantra gives you a lot of energy. Memorizing, we could memorize anything, the whole of Bhagavad Gita. Doing service to the teacher was very important. Contemplation and meditation to be peaceful, and concentration development. Knowledge became a part of their life, influencing their thought and emotion and action. All these helped in the development of character. Now you see, we have to have the thirst for knowledge. If a student enters the citadel of learning, it's not only cramming information into the brain, but applying this knowledge in the life to become a better individual, at social, secular, and spiritual level. We had the Gurukula system, where the teacher was the role model and the students had to stay in the Gurukul. There was a strict discipline out there, and the student had to follow the discipline. And it was so tough that it was difficult for the students to follow. Sometimes they may not even get food. The Guru Patni used to prepare the food for the children and the Shishya. But if supposing nowadays the parents are told that Guru has not given some food or something for some time, they'll run to the school and they will bring the children home. That is why the students were kept in the Gurukula. What is education? According to Swami Vivekananda, education is the manifestation of perfection already in a human being. That means this knowledge exists within ourselves, but we are unaware. We don't know that the knowledge is within ourselves because there are veils of ignorance which are hiding this knowledge. So, as a learner, we have to manifest this knowledge unto ourselves. The new education policy 2020 has come. I'm not going to discuss the whole policy. However, I'll just highlight 1 or 2 points. Wherever possible, the medium of instruction until at least grade 5 be in the home language, mother language, local language, or regional language. You see, today the children don't even know the mother tongue or the regional language. So at least they should know the Indian language, where in particular state they are staying, they should know that particular state's language. There is emphasis on Sanskrit and other Indian languages too. So that's a welcome. Now, if the knowledge is within you, that means while the learner discovers the knowledge because he or she knows that the soul is the infinite mine of knowledge and it has to be expressed. That means this human potential has to be expressed by removing all the obstacles. So what is the role of knowledge? Kindle that fire. हमने एक गाना सीखा था, शौर्य दो, शक्ति दो, दिल में प्रेम दो, दिल को जगा दो. तो ये यदि जग गया, then we can remove all the impediments, the ignorance and manifestation of this infinite, which is called awakening. So we have to understand, does the education which we are having now equip ourselves for the struggle of life? Does it bring out the strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of lion? Real education is that which enables one to stand on one's own legs. So, we have to supervise the child to find out
what is the talent which he or she has to follow? Because the child has lot of talents in him or her. There's always a conflict in the mind of the child, which one to follow, what to do. So the parents, the teachers have to supervise in order to achieve the harmonious and purposeful development. So Swami Vivekananda said, education must provide life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. Ideal type of education would produce an integrated, unselfish individual with full of virtues. So the enlightened citizens, they tackle these obstacles and they take the responsibilities on their shoulders. Help a person build a healthy and dynamic frame of mind and enable one to meet the challenges of life. They also prevent any future evil in people and society. Now, ultimately in life, what do we want? We may earn a lot, we have a lot of money, we'll have a house, a car, all the comforts. But if we are not happy, what is the use? Ultimately, everything you are getting for your happiness. What is happiness? Let us define. I have written happiness, H is equal to P plus E plus M. What is P? P is pleasure. Does that happiness long for a long time? If I take a ice cream which I like, well, I'll have happiness for a few seconds. After the ice cream is over, it's gone. Second is engagement. I'm engaging in learning something, music or something. Okay, fine. That will remain for some more time. But if we do some meaningful work, it'll remain with us for a long, long time. And beyond that is the blissfulness when we understand who am I. Now, I'll tell you here the story of Super 30. You all know Anand Sharma and Narayanan Krishnan. Anand Krishnan got the CNN award winner of 2010. He has an NGO where he feeds the people who are from the underprivileged section. And here you have Anand Kumar, Super 30, a film was made on him. And he selects 30 students from the slum areas. And he charges them 1 rupee. And then he trains them for IIT. Almost all the 30 students get into IITs or become big professors. How he's training? Does he take anything? That's the way he finds his happiness. We all know during the corona epidemic, what happened? Migrants were, in other places, they were not able to get home. Sonu Sood in Mumbai, he organized for 30,000 people buses, plane rides to leave them to their destinations, that is to their homes. What a wonderful idea and what a creative idea. So, pleasure is something which means, okay, I take it, I like it. It's calm, desire. वो मिल गया तो मैं खुश हूँ. Engagement is engaging in some hobby. मैं art करती हूँ, कुछ paint करती हूँ, उससे कुछ कमा भी लेती हूँ, अर्थ. Meaningful work is dharma. What Super 30 or Sonu Sood or Narayan Krishnan did is dharma. So you have to choose what you want. But the last option is the one which makes you more successful in life. If I talk about education, Swami Vivekananda said that the purpose of education is to have a society which thinks about well-being of a human being. That is sustainable development. Sustainable development का मतलब क्या है? कि भाई हम कुछ भी करें, चाहे साइंस में करें, कुछ भी करें, उसके रिपरकशन ना हो दूसरे जनरेशन के ऊपर. हमारे बच्चों को भी वो मिले, ये नहीं कि हमने हवा पोल्यूट कर दिया
अब वो रह ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे प्रोफेसर जाहिर खान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से गए केन्या में। केन्या में वहां पे जो स्टेपल फूड है वो है भुट्टा, कॉर्न। अब ये जो फार्मर्स इसको ग्रो करते थे वो मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक इंसेक्ट था जो कहते हैं स्टेम बोरर, वो उसकी पत्तियों को खा जाता था और उनके स्टेम को खा जाता था। तो भुट्टे थोड़ी आएंगे। और इनके एक वीड आता था जो सारे जो रूट्स हैं, जो जड़ है, उसको सराउंड कर देता था और पानी नहीं लेने देता था, तब भी मर जाता था। तो अब जाहिर खान ने ये नहीं कहा कि हम इसको जीएम और क्रॉप बनाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं बनाया उसने। उसने एक बड़ा अच्छा मेथड लगाया। एक रो लगाया आपका कॉर्न, दूसरा रो ऐसे ऑल्टरनेट करके लगाया, एक में कॉर्न एक में ग्रास, इसको कहते हैं नेपियर ग्रास, फिर कॉर्न फिर नेपियर ग्रास। ये नेपियर ग्रास क्या करता है? वो नेपियर ग्रास, सॉरी, जो नेपियर ग्रास है वो सराउंडिंग में लगाया और बीच में उसने लगाया एक प्लांट जो डेस्मोडियम प्लांट, जो कहते हैं लेग्यूम प्लांट है, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो लेग्यूम प्लांट बीच में और दोनों साइड में कॉर्न। तो जो लेग्यूम प्लांट है वो क्या करता है? वो उसके केमिकल सिक्रीट करता है कि जो वीड जो रूट्स को खा रहा है उसको मार देता है। तो अब रूट्स पानी अब लेने लगते हैं, पानी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और जो नेपियर ग्रास है वो क्या करता है? जो इंसेक्ट है स्टेम बोरर, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा? जो इंसेक्ट होंगे वो कीड़े जाके अंडे कहाँ देंगे? वो अपने एग्स ले करेंगे ग्रास प्लांट, फिर वो कैटरपिलर बनेगा, वो उनके स्टेम, ग्रास के स्टेम में जाके उसके म्यूसिलेज के अंदर में मर जाता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कितना अच्छा है। आपको कुछ डालना पड़े, इसको पुश टेक्नोलॉजी। क्या पुल कर रहा है? ये जो नेपियर ग्रास है वो पुल कर रहा है बाय सिक्रीटिंग वेरियस केमिकल्स द स्टेम बोरर टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जो कॉर्न है वो उसको पुश करता है, इसलिए इसको पुल एंड पुश टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो हमको क्या करना है? स्टूडेंट को माइंड को ट्रेन करना है, माइंड को नरिश करना है, और ये आज हमारे एजुकेशन में एब्सेंट है। डिसिप्लिन द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं? लास्ट में सब काम के लिए रखते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक आदमी था जो फार्मर एटलांटा में रहता था। उसका हर टाइम जो सारा क्रॉप मर जाता था क्योंकि बहुत स्टॉर्म आता था। तो ढूंढ रहा था, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरे को एक आदमी सहायता के लिए चाहिए, मगर कोई मिला नहीं। तो एक लड़के ने आके कहा, छोटा लड़के ने, कि मैं आपका हेल्प कर दूंगा। तो उसने कहा आप कैसे करोगे? कहता है मगर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? आई स्लीप व्हेन द स्टॉर्म ब्लोज, मैं सोता हूँ जब स्टॉर्म ब्लो करता है। तो उसने कहा भाई फिर कैसे होगा? चलो, कोई नहीं मिल रहा था, उसको रख लिया। अब ये लड़का बहुत अच्छा काम करता था और ये जो किसान था इससे बहुत खुश था। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर का स्टॉर्म आया और जब इतनी आंधी तूफान आया, उस लड़के पास उसके हट पे गया। उसने कहा उठो उठो उठो, बहुत जोर का स्टॉर्म आया। उसने कहा मैं तो नहीं उठता, मैंने तो कहा आई स्लीप व्हेन द स्टॉर्म ब्लोज। तो उसको बहुत गुस्सा आया, मगर जब वो फील्ड में गया उसने देखा कुछ भी नहीं खराब हुआ। तो सब काम पूरा खत्म करके, सब चीजों को बांध करके अच्छी तरह टारपोलिन लगा के रखा था। स्टॉर्म कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें लास्ट मिनट तक नहीं काम करना। जब जब काम की जरूरत हो साथ साथ काम करते रहना है, लास्ट मिनट में यहाँ वहां नहीं भागना। इसलिए हमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और कलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि सारा टाइम हम व्हाट्सएप में ही लगे रहें या फेसबुक में लगे रहें या इंस्टाग्राम में, क्योंकि ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। स्वामी विवेकानंद में कंसंट्रेशन की पार देखिए, कहानी कितनी अच्छी है। एक बार वो मेरठ में गए, वहां पे पास में लाइब्रेरी थे, उनके गुरु भाई किताब लेके आते थे, अगले दिन एनसाइक्लोपीडिया को वापस कर देते थे। नाउ द लाइब्रेरियन सेड,
अरे तुम्हारा जो गुरु भाई है ना वो पढ़ता उड़ता नहीं है, ऐसी किताब ले जाते हो। तो गुरु भाई ने जाके विवेकानंद जी को कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा स्वामी जी, आपको ही जाना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। अगली बार जब वो रिटर्न करने गए तो उसने कहा कि लाइब्रेरियन का क्या पढ़ते हो तुम? उन्होंने कहा सब पढ़ता हूँ, आप देख लो किसी भी पेज से पूछ लो। जब उन्होंने पेज से पूछना शुरू किया, हर पेज का उनको पता था प्रश्न का उत्तर। वो हैरान रह गया। तो देखा तो उनकी तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी, एक बारी एक पेज को देख लेते थे, इतने कंसंट्रेशन से देखते थे कि सब उनके अंदर आ जाता था। एक बारी स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क गए, वहां पे वो ब्रिज के ऊपर खड़े थे, वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक फ्लोटिंग जो एग शेल्स थे उनको शूट कर रहे थे। किसी बच्चे से शूट हुआ नहीं, स्वामी जी हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी क्या यहाँ आप शूट कर सकते हो? कहा लाओ गन। उन्होंने एक के बाद एक 12 एग शेल्स को शूट कर दिया। उन्होंने कहा ये कैसे किया, आप तो बहुत अच्छे शूटर हो लगता है। तो उन्होंने कहा पहली बारी ये गन को हैंडल कर रहा हूँ, मैंने तो बंदूक कभी हैंडल की नहीं। तो बहुत ही हैरान रह गए। ये था पावर ऑफ कंसंट्रेशन। उन्होंने कंसंट्रेशन हो तो कुछ भी कर सकते हो, बट हमें डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे। हर टाइम ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, जब खेल रहे हैं तो खेलो, जब म्यूजिक सीख रहे हैं तो फोकस होके काम करो। तो वे टू सक्सेस इज टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of the body be full of that idea, and just leave every other idea alone. That is the way to success, स्वामी विवेकानंद ने कहा। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना हो, कंसंट्रेशन करना हो, प्योर माइंड होना चाहिए। दैट मीन्स इतने डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सेंस प्लेजर्स चाहते हैं, सेक्स चाहते हैं, नेम, पावर एंड पोजीशन, ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। और हमें अपना विल पावर डेवलप करना पड़ेगा, आत्मबल जिसको कहते हैं, और उसको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे मैं एक छोटा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी जो एक मिशेल करके एक साइकोलॉजिस्ट ने किया। उन्होंने छोटे 5 साल के उम्र के बच्चों को अलग अलग कमरों में एक एक मिठाई दे दी और कहा मैं 10 मिनट में आता हूं, यदि आप मिठाई नहीं खाओगे तो दूसरी मिठाई मिलेगी। कुछ बच्चों ने खा लिया, कुछ बच्चों ने नहीं खाया। जिन बच्चों ने नहीं खाया उनको दूसरी मिठाई भी मिली और उनको पावर ऑफ कंट्रोल बहुत था। 14-15 वर्ष बाद इन बच्चों को देखा तो जिन्होंने ये कंट्रोल किया था अपने आप को मिठाई खाए बिना, वो बहुत अच्छे इंसान बने। That is what is the one how to control your mind. अब जब विल पावर का आता है, देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम कहते हैं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दैट्स नॉट ट्रू। आप जानते हैं अरुणिमा सिन्हा, ये लड़की ट्रेन के नीचे ट्रैक में आ गई थी, उसका एक पैर आधा कट गया था और इसका ऑपरेशन होके उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगा दिया। मगर क्या उसके साथ वो बैठी रही? उसने कहा नहीं, मैं कॉन्कर करूंगी एवरेस्ट। लोग हंसने लग गए, मगर उसने अपने भारतवर्ष का झंडा एवरेस्ट पे फैलाया क्योंकि उसने अपने ऊपर पूरा विश्वास था, फेथ इन हरसेल्फ, एंड शी हैड द विल पावर टू डू इट। ऐसे हमें विल पावर डेवलप करना पड़ेगा। आजकल क्या हुआ है, हम लोग अपने कल्चर को ही नहीं समझ, हम तो वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं क्योंकि वही फैशन लगता है। मगर यदि हम अपने कल्चर को देखें, वो अपने जो शौक्स आते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हमें देखना है कैसे हम अपने कल्चर को सब बच्चों को सिखाएं। इसीलिए रामकृष्णा मिशन में वैल्यू एजुकेशन स्कूल्स में कराया जा रहा है। एक और चीज है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको एक स्पिरिट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा लभ्यते ज्ञानम कहते हैं। यदि श्रद्धा है तो टीचर से सीख सकोगे, नहीं तो नहीं। आचार्य देवो भवा, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोग एक हिम बोलते हैं कि भाई सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। मैं शांति से पढ़ाई कर सकूं, दोनों को आपस में रेस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो। तो ये
हम प्रेयर टुगेदर करते हैं और बच्चों में श्रद्धा होनी चाहिए। एक ट्रू टीचर का क्या है, he should come down to the level of the student, transfer his soul to the student's soul, see through the student's eyes, hear through the student's ears, understand through his mind. That is real teacher. What to teach? The teacher has to think. How to think? He has to make a student think. How to think? What to think? How to discriminate? विवेक क्या है, क्या ठीक है, क्या नित्य वस्तु है, क्या अनित्य वस्तु है. How to appreciate. Help training students' mind, as that is the chief instrument of learning. Rabindranath Tagore ने कहा, the main objective of teaching is not to give explanation, but to knock at the doors of the mind. I can recollect many things which I did not understand, but which stirred me deeply. I was pacing the terrace of our house late in the afternoon. I could see at once that evening had entered me. Its shades had obliterated myself. Now that the self was in the background, I could see the world in its true aspect, full of beauty and joy. So what do we require? Inner development. आत्म विद्या चाहिए, अध्यात्म विद्या चाहिए. बाहर से तो हम पॉलिश कर लेते हैं, नए नए कपड़े डाल देते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, मगर पॉलिश बाहर से नहीं, अंदर की पॉलिश है. यही ट्रेनिंग करनी है. अब ये नॉलेज ने क्या किया है, ऐसे एजुकेशन ने हमारे आर्टिफिशियल वॉन्ट्स कर दिए हैं. पैसा चाहिए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, और हम इसी स्ट्रगल में ही मर जाते हैं. बट हमको क्या करना है? कैरेक्टर बिल्डिंग अगेंस्ट करियर ओरिएंटेशन. कभी भी कोई आता है जी, कितने पैसे मिलेंगे यदि ये पर्टिकुलर डिग्री ले ली. पैसा नहीं, कैरेक्टर कितना बिल्ड हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट. कैरेक्टर क्या है? इट इज सम टोटल्स ऑफ द वर्च्यूज एंड इंप्रेशंस कमिंग टुगेदर व्हिच फॉर्म अ हैबिट, एंड कैरेक्टर इज रिपीटेड हैबिट्स. तो क्या है? लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, फियरलेसनेस, कंपैशन, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ये सब हमारे कैरेक्टर में आते हैं. रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर व्हाट? हम कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ हायरार्की है. एक बॉस है, फिर एक जमींदार, एक सफाई कर्मचारी है, एक अकाउंट्स आदमी है. सबका अलग अलग रोल है. हमको रोल को नहीं रेस्पेक्ट करना, हमें इंडिविजुअल बीइंग को रेस्पेक्ट करना, ह्यूमन बीइंग को रेस्पेक्ट. बट इन सब करने के लिए बहुत तपस और ऑस्टेरिटी की जरूरत है. तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि ट्रूथफुलनेस ही ग्रेट, बड़ा, सबसे बड़ा तप है. लिथार्जी हटाना है, माइंड को रिसेप्टिव बनाना है टू गेन नॉलेज. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज एवरी डे, eat moderately, live a simple life. Teacher have to be role models, क्योंकि वो उनके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं than inside the classroom, and they have to impart the moral values, and they should be the moral exemplar. वो रोल मॉडल होने चाहिए for all moral values. तो यूएन क्या, यूनेस्को रिपोर्ट क्या कह रही थी 1972 में? हमें होलसम ह्यूमन बीइंग बनाना है, जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड एथिकल इंटीग्रेशन करे. कंप्लीट मैन और कंप्लीट ह्यूमन और कंप्लीट बीइंग. अपर क्लास की क्या ड्यूटी है? यदि हमें एजुकेशन हो गया है तो हमें पुअर को अपलिफ्टमेंट करना है. वीकर शुड बी गिवन अ चांस टू बिकम स्ट्रॉन्ग. साइंस और स्पिरिचुअलिटी क्या कहते हैं? चैनलाइज ऑल नॉलेज ऑफ साइंस फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल बॉय, आकाश मनोज. उसके ग्रैंडफादर की साइलेंट हार्ट अटैक से डेथ हो गई. उसने कहा, क्या हम पता नहीं कर सकते कि हार्ट अटैक क्यों और कब होता है? उसका कोई इंडिकेटर नहीं होगा. तो उसने देखा एक कार्डियक बायोमार्कर है जिसको कहते हैं हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन 3. वो बहुत बढ़ जाता है 6 घंटे से पहले हार्ट अटैक के, और वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो उसने एक स्किन पैच बनाया जिसको आप अपने रिस्ट में लगा लो.
तो वो पॉजिटिव इम्पल्सेस देता है और वो अट्रैक्ट करेगा इस प्रोटीन को जो बढ़ जाता है, और उस पैच को निकाल के देख सकते हैं कि कितना FAB3 प्रोटीन है। उसको हमारे प्रेसिडेंट प्रणब रॉय जी ने एक अवार्ड दिया, द प्रेसिडेंट्स मेडल। स्वामी विवेकानंद के व्यूज क्या थे विमेन के ऊपर? He did not regard women as mere flesh and bones with biotic potential, but उन्होंने कहा ये शक्ति की, ये मात्र शक्ति है। It has the principle of creation. आप जानते हैं पुरुष और प्रकृति, प्रकृति के बिना भगवान भी क्रिएशन नहीं कर सकते। तो शक्ति जो है वो प्रकृति जो है वही फीमेल है। Equality of sexes. There is a perfect balance and harmony. अंदर से तो सब वही आत्मा है, पर बाहर से हमें अलग अलग ढांचा दिया हुआ है, या तो फीमेल का या मेल का। But we have the unique role in society, but we are equal. There's no difference between male and female sex. Women as a mother, she is the epitome of love, service and sacrifice. She is the center of family and our highest ideal. Respect your mother. Mother is the representation of God. भगवान ने आप सके, उन्होंने माँ को भेजा धरती पे. So women is mother first and mother last. Motherhood. God is called mother. Mother in one form thou art, I salute thee mother. ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। एक आदमी ने स्वामी विवेकानंद से कहा, हम क्या कर सकते हैं ये विमेन के प्रॉब्लम के लिए? बार बार वो तंग कर रहा था, तो स्वामी विवेकानंद और ठीक विधवाओं के लिए क्या करें? उन्होंने कहा, am I a woman? Am I a widow that I have to take care? Educate a woman. तो विमेन का यदि वेलफेयर ऑफ ह्यूमन किसी जगह इंप्रूव होता है तो वर्ल्ड ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा। So educate a woman first, leave them to themselves. Women will work out their own density. Women must be educated because she can mold the next generation. Educate a woman, you educate a whole family. Honor the Shakti. देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। With 500 men, the conquest of India might take 50 years. With as many women, not more than a few weeks, because she is the power, Shakti. Ideal woman. The idea of perfect womanhood is perfect independence. Chastity. Wife or mother is the center of the circle. Preserve these beautiful characteristics. At the same time, develop the intellect of the women. Future Indian woman with the ideal women of the world. I would like to summarize whatever I've talked about. The characters or character building. These are the 8 favorite flowers of Vishnu. A beautiful verse attributed to Srimad Vedanta Desikar. Ahimsa prathama pushpa, pushpam indriyam nigraha, sarvabhuta daya pushpam, shama pushpam visheshata, jnanam pushpam tapaha pushpam, shanti pushpam tathaivacha, satyam ashtavidha pushpam, Vishnu preetikaram bhavet. Ahimsa, non-violence. This is the first Paramatma. First flower pushpam, Indriya nigraha, sense control. The second flower offered to Vishnu. Sarva bhuta daya, love to all being, the third. Shama, forgiveness, the fourth. Jnanam, knowledge, fifth. Tapas, austerity, meditation, sixth. Shanti, peace, seventh. Satyam, truth. Truthfulness. The Taittiriya Upanishad has given certain commandments, and in the Banaras Hindu University Convocation, every graduate has to recite these lines. I just read a few lines. Satyam vada, dharmam chara, swadhyayana ma pramadha, matrudevo bhava, pitrudevo bhava, acharya devo bhava, atiti devo bhava, esha adesha, esha updesha, etadanud shashanam, evam upasita अव्ययम.
The English translation is, speak the truth, abide by your dharma, never be idle in your studies, know your mother to be like goddess, that is, serve her, please her as if she were a goddess, know your father to be like a god, know your teacher to be like a god, know your guest to be like a god. O disciples, only do those actions which are in accordance with the Shastras and society. Do not perform actions that oppose this. Moreover, only adopt our good conduct, nothing else. After leaving here, if you find a teacher better than us, then respect him. Pay homage to him by offering him a seat. This is our final command. This is the teaching. Go forth, live according to this. I would like to end with the two small verses, a vision by Swami Vivekananda. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. We have to understand who we are. We are only Atman, the self, not the body and flesh. Once you have that Atma Gyan, you have the whole knowledge. Smaller than the smallest, greater than the greatest. This self forever dwells in the hearts of all. A person freed from desire, with mind and senses purified, beholds the glory of self and is without sorrow. Katha Upanishad. Thank you.